Evening everyone, a very good evening to all of you bachcho and welcome to ExamDost. Welcome back to this channel, and I'm back again with one strategy session for all of you. That is, what topics can you skip under control system? ठीक है, कौन से टॉपिक्स को आप लोग स्किप कर सकते हैं in order to cover the subject in the least possible time and to obtain the maximum possible marks. तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहेगा? टू मैक्सिमाइज द एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो. तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलना चाहिए, मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए, वो भी कम से कम एफर्ट के अंदर. दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर दैट which topics are not as significant as the other topics in the control system that we are going to talk about in this particular session. Okay. So just to let you all know, beta, I am starting my control system course from 6th of June. Okay. So in case you guys are interested, you can join my control system batches, control system individual courses, if you would be interested, starting from 6th of June. Okay. Is that clear? Chali. So let me get started, bacho. Let us get started. So first, let us look at the syllabus. Let us look at the syllabus. This is for gate electrical. So it contains mathematical modeling. It contains representation of system. Mathematical modeling is where you represent mechanical systems in terms of electrical circuit. Representation, it can be in the form of a transfer function, block diagram, all these things. Concept of feedback, concept of transfer function, block diagram, signal flow graph. Okay. तो दिस इज द बेसिक. ये सबसे बेसिक है जहां पे आपका कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होता है. दिस इज द वेरी बेसिक फ्रॉम वेयर योर कंट्रोल सिस्टम इज गोइंग टू स्टार्ट. देन बेटा, देन व्हाट हैपेंस? आफ्टर दैट यू हैव ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस. दिस इज कॉल्ड एज द टाइम रिस्पॉन्स. आफ्टर दिस you have stability using Routh-Hurwitz. That is your Routh-Hurwitz criteria, stability of control system. You have root locus, that is the 4th chapter. Then frequency response, Nyquist, Bode plot. Okay. Then compensator and controller. And the last is the state space model. So you have total of 7 chapters. अब obviously यार देखो, ये 7 चैप्टर्स कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा? टू कवर ऑल दीज 7 चैप्टर्स यू विल नीड एट लीस्ट हाउ मेनी आवर्स? एट लीस्ट 90 आवर्स फॉर द लेक्चर्स ओनली. ओके, कम से कम 90 घंटे आपको लेक्चर्स के अंदर लग जाएंगे. तो एंड द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक विल बी अराउंड, द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी अराउंड 8 to 10 मार्क्स. तो 8 से 10 नंबर का ये रहेगा बेटा, और इसके अंदर आपको लग जाएंगे कम से कम नहीं तो 90 घंटे लग जाएंगे. तो मैं आपको ये बताने वाला हूं इन चैप्टर्स में से ऐसे कौन से चैप्टर हैं विच यू कैन स्किप और विच टॉपिक्स यू कैन स्किप फॉर द गेट एग्जामिनेशन. ओके. कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क की तरह हार्ड है या इजी है? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेटवर्क हार्ड है, बल्कि नेटवर्क तो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है जो क्लास 12th के लेवल से स्टार्ट होता है. तो नेटवर्क अगर आपको हार्ड लग रहा है स्वप्निल भाई, दैट मींस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ. You are not focusing on the problem solving technique. You are more focused on the theory. You are more focused on watching the videos. क्योंकि यार देखो, नेटवर्क जब तक हाथ से नहीं लगाओगे नेटवर्क नहीं होगा. नेटवर्क इज नथिंग बट सॉल्विंग द सर्किट्स, एंड फॉर एवरी टाइप ऑफ सर्किट देयर इज अ पर्टिकुलर अप्रोच. बाय फॉलोइंग दैट वी कैन सॉल्व एनी सर्किट. लाइक ट्रांजिएंट के कुछ स्टेप्स हैं सॉल्व करने के, एसी एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं. यस, circuit solution can be complicated, can be lengthy, but obviously it is always logical होता है. So if you can understand the concept, okay, and you can understand the problem solving technique, you can make network very easy. But obviously control system is very different as compared to network analysis. बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, बल्कि मैं कहूंगा बाकी सभी सब्जेक्ट से काफी अलग सब्जेक्ट है. बिकॉज यहां पे बहुत सारा मैथमेटिकल अप्रोच भी होता है और ग्राफिकल अप्रोच भी होता है. इन कंट्रोल सिस्टम देयर इज अ बैलेंस ऑफ द मैथमेटिकल एज वेल एज द ग्राफिकल अप्रोच. सो इट बिकम्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर सब्जेक्ट्स. ओके. नाउ व्हेन यू कम टू ECE, ECE does not contain mathematical modeling. First of all,
It contains basic control system component, feedback, transfer function, block diagram, SFG. First chapter. Transient and steady state analysis, second. Routh-Hurwitz, third. Root locus, fourth. Frequency response, Nyquist stability, Bode criteria, fifth. And lead lag compensator, sixth. And state space model, seven. Total of 7 chapters, but it excludes mathematical modeling. IN. The first chapter is the same. The second chapter, time response. Third chapter, Routh criteria. Fourth chapter will be your root locus. The fifth chapter will be again frequency response, phase margin, gain margin. They have mentioned explicitly. देखिए बाकी ब्रांचेस में फेज मार्जिन गेन मार्जिन नहीं लिख के दिया है, बट फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन इज इंक्लूडेड इन ऑल द 3 branches, but here they have mentioned explicitly. Then your compensator controller, state space. After that, rest of the part is called as process control. बाकी का हिस्सा कहलाता है process control. Okay. So process control is an entirely separate topic. We deal it as a separate topic under instrumentation. Now, beta, if I talk about the weightages, so transfer function is my basic topic. This you have to anyhow cover. ये तो आपको कवर करना ही पड़ेगा बेटा, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास. दिस इज कंपल्सरी. ओके. So the average weightage is 0.8 marks in electrical. भली weightage कम है, but you have to cover this. Then time response, 1 mark. This is important. Okay. Root locus also you should, sorry, Routh criteria you should also do, because sometimes Routh criteria gets connected to other chapters and you can see a question based on multiple concepts. कई बार राउथ क्राइटेरिया ना अलग चैप्टर्स के साथ, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के साथ जुड़ करके आ जाएगा. So for that you have to be mentally ready. Then root locus. This is something that you can skip. In most of the examination, the weightage of this topic is very, very less. Even in 2025, it was asked for 1 mark only. Okay. Frequency response is the most important. This is where you should put your maximum effort. यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा effort डालने की जरूरत है, because it has the highest weightage and it has the maximum duration. Then your state space is important. Okay. And this is, I will say, less important. Control system design. So if you have to cover 5 out of 7 chapters, you can skip control system design and root locus. Rest 5 chapters you have to do. Even in the first chapter like transfer function, you can skip the block diagram algebra. You can directly move on to the signal flow graph. अगर वहां टाइम बचाना चाहते हो तो ब्लॉक डायग्राम की जगह सिग्नल फ्लो ग्राफ पे आ जाना. Beta, it is very easy to understand control system, Swapnil, because there are not very deep concepts. Your deep concepts will always come in your core subjects, but in control system, the depth is not that much. Coming to EC, in EC, the weightage of transfer function and time response is slightly higher than electrical. अच्छा, यहाँ पे देखिए total weightage 2025 में 11 marks का था, but average is around 10 marks. So you can expect in gate electrical, the weightage will be 10 marks. Okay. Now, the weightage of transfer function and time response is slightly higher than electrical. Stability becomes important. It is more weightage than electrical. But root locus, again very low weightage. Control system design, low weightage. Frequency response, if you see, lower weightage than electrical. Electrical has the highest weightage of frequency response, but in EC its weightage is lesser. State space, again same thing. तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इलेक्ट्रिकल वालों को, नॉट दैट मच फॉर ईसी. एंड द वेटेज फॉर, देखो 2025 इट वाज 10 मार्क्स फॉर ईसी. तो कंट्रोल सिस्टम हैड हायर वेटेज बोथ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी इन 25, but average weightage remains around 8 marks. So control system is slightly more important for electrical. It is sometimes considered to be the core subject of electrical. बहुत जगह कंट्रोल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल का कोर माना जाता है, so it's more important for electrical than EC.
For IN, if I talk about, I have the data till 2024. The weightage is around 10 marks. Which topics are important if I talk about control system? Basically, time response analysis. Okay, time response analysis. Then root locus is slightly more important in IN as compared to electrical EC, frequency response. And here you can understand root locus also. Okay. Stability to anyways you have to cover because it can be combined with many other topic, and this is the fundamental. Even I can rate stability also under the fundamental of control system, because you have to understand stability. How can you judge whether a system is stable or unstable? Simple. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहां भी अच्छे खासे वेटेज का आता है. स्टेबिलिटी और ट्रांसफर फंक्शन बेसिक हो गए, बाकी रूट लोकस का वेटेज यहां बढ़ जाता है. और वहीं अगर आप देखोगे स्टेट स्पेस और डिजाइन, डिजाइन वाला पार्ट यहां आ सकता है ज्यादा, क्योंकि ये प्रोसेस कंट्रोल में चला जाएगा. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन आईएन का कोर हो जाता है अंडर प्रोसेस कंट्रोल. So this is more important for IN as compared to electrical and EC. सर आरआरबी जेई में बीजेटी ओपैम्प के क्वेश्चन में डिफिकल्ट हो रही है. मैं पढ़ा तो है बट कम समझ में आया. कुणाल भाई देखो, बीजेटी ओपैम्प के सवाल अच्छे करने के लिए पहले नेटवर्क अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो गया तब आप जो है बीजेटी ओपैम्प या ओवरऑल एनालॉग की अगर बात करें तो एनालॉग सॉलिड कर सकते हो. बाकी देखो, मैं एनालॉग का कोर्स लॉन्च करूंगा, इंडिविजुअल कोर्स, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स. ठीक है. तो देखो, दिस इज द फ्लो. कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन, टाइम रिस्पॉन्स, राउथ हर्विट्ज, रूट लोकस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, स्टेट स्पेस, कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर. तो दिस इज द फ्लो फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल ईसी एंड आईएन. कार्तिकेय का डाउट है सर आपके यूट्यूब क्लास और पेड कोर्स में क्या डिफरेंस है. देखो यार, मेजरली मैं डिफरेंस बताता हूं. देखो, जब भी मैं कोई कोर्स लॉन्च करता हूं, चाहे यूट्यूब पे चाहे पेड पे, वो उस टाइम का मेरा बेस्ट ऑफ द नॉलेज होता है, उस टाइम का मेरा बेस्ट कोर्स होता है. अब एवरी ईयर आई स्ट्राइव टू मेक इट बेटर. हर साल मेरी कोशिश रहती है कि उसको और बेहतर किया जाए, बेहतर किया जाए. उसके अंदर कुछ चीजें ऐड की जाएं, कुछ चीजें सिंप्लीफाई की जाएं, कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दें, कहीं कोई चीट शीट मैं आपको बना करके दे दूं, कहीं कोई समरी ऐसी प्रोवाइड कर दूं, कोई टेबल ऐसी बनवा दूं जिससे आपकी जॉब इजी हो जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. तो 10 to 20% एवरी ईयर द कोर्स विल इंप्रूव. अब अगर आप मेरा 3 या 4 साल पहले का देखोगे कोर्स, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का, नो डाउट इट इज सफिशिएंट टू कवर कंट्रोल सिस्टम टू गेट अ रैंक, बट थिंक ऑफ इट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि अगर 10% भी मैं हर साल इंप्रूवमेंट मानता हूं तो इन 3 years it will be 1.1 cube. How much it is? 1.1 cube. So it will be 33% इंप्रूवमेंट. इस तरह से सोच सकते हो. ठीक है, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में आपको समझाऊं. किसी किसी सब्जेक्ट में देखो मेजर लीप भी होता है. जैसे ही मैंने मैथ्स कुछ ही साल पहले पढ़ाना चालू किया, 2-3 साल पहले, उसके पहले मैंने बहुत साल पहले पढ़ाया था. तो अभी मैं क्या है, मैथ्स के अंदर हर साल मेजर इंप्रूवमेंट्स करता हूं. मैथ्स के अंदर काफी कंटेंट ऐड किया जाता है जिससे कि आप आईआईटी से एक कदम आगे रहो. ऐसे इस बार एनालॉग पूरा का पूरा कोर्स रिवैम्प कर रहा हूं. सिग्नल के अंदर मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं. वहीं कंट्रोल सिस्टम ऑब्वियसली मैं काफी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूं, तो इसमें लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट थोड़ा कम रहेगा. तो इट डिपेंड्स कि बेटा हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत तगड़ी तरीके से रिवैम्प होता है. तो मिनिमम 10% इंप्रूवमेंट होता है. मैक्सिमम आई वुड से इन अ ईयर it will range in the 30 to 40%. Maximum improvement will range in the 30 to 40% changes. ओके. तो बेटा कैसे आप कोर्स को फॉलो कर सकते हैं? देखिए, आप लाइव कोर्स अटेंड कर सकते हैं, विच आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 6th June, और यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाया यूट्यूब और पेड, है ना. वी हैव द यूट्यूब recorded course also, paid recorded course also. Okay. So if you feel sleepy during the class, आपको लेक्चर देखने में दिक्कत होती है, नींद आती है, तो you can take running notes. That is when I am teaching, you can note everything down. And if you are more attentive, then you can download the PDF and you can invest your time in the practice. Because बेटा जब आप रनिंग नोट बनाओगे, कुछ ना कुछ चीजें लिखना रह ही जाएंगी.
Whenever you take running notes during an online class, you'll always miss some point which you have to cover after the class. But if you are content with the PDF, then you can invest that time into the practice. But make sure that you make handwritten short notes. This is very, very important that you make handwritten short notes. How to make it, sir? In each and every course of mine, I'll mark the short notes. You just have to note it down. Okay. Plus, sometimes I provide cheat sheet और summary. बहुत बार मैं खुद आपको चीट शीट या समरी प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कि आपकी जॉब आसान हो जाए सवाल लगाने की. जब मुझे लगता है ना आप लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो जा रहा है यार कि काफी ज्यादा चीजें हो गई हैं, when I feel that it's a lot for you to take in, then I'll do such kind of stuff. Revise the short notes on Sunday and attempt part test on Sunday. संडे आपका क्लास ऑफ रहेगा, तो संडे आप रिवीजन करके टेस्ट दीजिए जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है. कंट्रोल सिस्टम के लिए बेटा बेसिकली लैपलास रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो चीज मैं आप लोगों को कंट्रोल के स्टार्टिंग में करा देता हूं जितना रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या आप यूज करोगे, चाहे आप पेड यूजर हो या फिर यूट्यूब स्टूडेंट हो, पीडीएफ यूज कर लो और हैंड रिटन नोट्स आप बना लो. क्वेश्चंस के नाम पे आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, ये भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है. And you have to use the test series. Okay, let me show this to you where you can find each of these things even as a free user. अगर आप YouTube से भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको ये सब कहां पे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं. देखो, if you go to our website beta, first of all this is the subject wise course of control system. It will start on 6th of June. Okay, the fees is just 2500 plus GST and you can right now get 30% off using EB30. This is the subject wise course. For YouTube students, basically if you go in the free downloads, you have to go to the YouTube lecture PDF. Okay, if you go to content, gate, full courses, here you will find all the PDF of control system. Okay, this is the complete PDF of control system. And you will find test series here. This is the test series that is available which you can buy. For previous year question, you can go to this previous year question. You can go for gate electrical. This is the PDF of control system. For gate EC, this is the PDF of control system. So you can find out previous year questions also here, which is free of cost. So all this stuff you can find on our website. And I'm starting the new course of control system from 6th of June, which is Friday. Next Friday, I'll be starting 1 week from now. And we are also starting new batches, which is the live plus recorded batch. Here, signal is recorded, rest everything is live. For ESE, your extra syllabus and signal will be recorded. Two things will be recorded. Extra syllabus like microprocessor, like material, like computer fundamental, that will be recorded, plus signal will be recorded. Rest everything will be live. Okay, rest everything will be live and the validity is till 30th of June. So we have dropped the price, plus we are giving you 30% off. Do not use the code EB10, use EB30. Next, for GATE, we have a bilingual batch. Both English and Hindi students can attend this batch. It is starting from 6th of June. Here also, your signal is recorded, everything is live. And here you are getting price drop plus discount. So the price will be at 30% off, 14,000 plus GST. Live plus recorded batch we have for EC, we have for IN, and for GATE 27 we have the full live batch. Okay, full live batch. For recorded courses, you can go to GATE batches recorded. We have GATE and ESC recorded. We have GATE recorded, GATE electrical, GATE EC, GATE IN, core combo, non-core combo, and the RIB. All are available in the recorded form. And you will get 30% off on all the courses using EB30. आलोक भाई देखो, as such तो standard books की जरूरत नहीं है, but keep it as a what I would say, keep it as a handbook or as a guide, that wherever or whenever you are stuck, you can go back to the standard book and you can basically refer if you are not getting enough clarity in any topic.
But if you are learning with me, in case you are stuck anywhere, you don't have enough clarity, you can come to me and I'll guide you. ठीक है? तो अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक को आप रख सकते हो साथ में कि कभी भी अटकोगे तो देख लोगे. Okay? So I'll see you all now on Saturday. Okay, Saturday I'll see you all again. Till then, thank you. Take